Good evening, everyone. So last time we have the whole session on three remedies, but we were not able to record. So I will try and cover those three remedies in short this time. But again, without Dada, it is half the fun because वो ही थे जो बीच बीच में he would make the atmosphere light, or he would try to pull somebody or the other's leg, or he would try to question me, to question other other members also. So that's kind of not a case with me. I'm just not like him. But yes, this was something he was looking forward to from a very long time, जो हम avoid कर रहे थे because it was too much. It was too difficult for me to keep pace with his enthusiasm. So every time we were going with the case study, so there were multiple questions he would throw to the patient's mother, क्योंकि बच्चे होते थे छोटे तो उनका तो पेश नहीं देते थे, but he would definitely tell the moms to keep on sending the videos of the kids. वो वीडियो देख देख के बच्चे की हरकतें देख देख के बच्चे का एंथुजियाज्म देख के द वे दे आर ईटिंग, कई बार बोलते थे कि उसके खाने की आप वीडियो भेजिए, कई बार बोलते थे कि वो जब ऐसे ही बैठा हो या सो रहा हो उसकी वीडियो देखिए. सो वो वीडियो से आधा टाइम रेमेडी निकाल लेते थे क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते थे, एंड ही वुड बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द टाइम mothers are overwhelmed by the situation of the hyperactive child or ADHD child, or whatever the trouble the child is having. तो moms आधे time तो overwhelmed होती हैं. So they are not in a right position to give the exact case history. And sometimes what would happen that we would question something and the mother would answer something. Even the fathers, कई बार तो fathers भी होते थे, but वो अपनी तरफ से ही बताना चाहते थे. मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, तो हम लोग को क्वेश्चंस रीफ्रेम भी करने पड़ते थे. बट ऑल इन ऑल, the symptoms that we found in children are those remedies that we are sharing. It is entirely for the symptoms of the children. आपको वो symptoms बहुत सारे अलग अलग books में भी मिल जाएंगे, but I have tried to compile from the case histories, especially the symptoms which we have found in the children. Beyond that also there are many symptoms, but majority of the symptoms I have tried to cover it up because he would bombard me with the questions. He would bombard me with so many articles. But beyond that, there were brainstorming sessions between Dada and Dada's team regarding the case histories. कि तुमने ये symptom देखा था, तुमने ये चीज देखी थी या नहीं देखी थी. And eventually in between, I will try to just tell also कि ये case में हमने ये वाली medicine दी थी as much as possible. Yes, of course. So last time we have covered Calcarea cough, Calcarea fos, Natrum erraticum. So this time I am going to cover Spiraita cough, and Dr. Mansi, she's going to cover chamomile. So once again, let me remind you that in homeopathy, we treat the patient and not the disease. And this kind of a treatment is known as constitutional treatment. And the base of the constitutional treatment is entirely on the mental and physical generals of the patient, because most of the time the disease is relapse kind or it is a heredity. So we have to go deep into the root of the disease to treat the patient. So finally, if the disease is treated, the patient is treated. So the most of the stress is laid only on the patient. There comes the history. And if sometimes it would take just 3-4 months, sometimes it would take 6 months. Most of the time, it has taken us almost 9 to 11 months, or even a year with the little ones. क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते. I would repeat again, मदर एंड फादर हिस्ट्री देते हैं, जो कि अक्सर बहुत वेवर्ड हिस्ट्री होती है इन द बिगनिंग. समटाइम्स पेरेंट्स आर एम्बैरेस्ड, मॉम्स आर एम्बैरेस्ड रिगार्डिंग द चिल्ड्रंस एटीट्यूड या बिहेवियर पैटर्न, या उनके दिमाग में पहले से ही बनने लग जाता है मेरा बेटा स्लो है, मेरा बच्चा स्लो है, मेरी बेटी को एडीएचडी है. सो हमको सबसे पहले बोलना पड़ता था कि declutter your mind, declutter your thoughts, declutter your embarrassment, declutter everything that is there in your mind regarding your children. अब एक बार दे दिया है तो थोड़ा सा भरोसा रख के देखिए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिलीव मी, 80% ऑफ द टाइम्स बच्चे नॉर्मल होते हैं. बच्चे ओवर एक्साइटेड हाइपर होते, क्योंकि
हमारी प्रॉब्लम होती है वो, हम बच्चों को टीवी के सामने खिलाना चाहते हैं, दे आर वॉचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज समथिंग दे आर नॉट सपोज टू वॉच, दे आर ईटिंग द फूड वाइल वॉचिंग। हम बच्चों को पैसिफाई करने के लिए चिप्स के पैकेट पकड़ा देंगे, बच्चा रो रहा है, उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मम्मी मुझे ये देगी, और बच्चे जानबूझ के ऐसा करते, दे आर ओवर स्मार्ट। बट एज माई पेरेंट्स ऑलवेज से कि अगर बच्चा शेर है तो तुम्हें सवा शेर होना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम do not scold them. You need to have patience. I've never had that kind of patience. I learned over the years. I have seen my mom. She is immense. She has immense patience. And I was so, I was so embarrassed seeing कि मैं इनकी बेटी हूँ. But eventually, कोई ना कोई पेरेंट का तो आपके अंदर आता ही है. So if your child is hyperactive, remember that is 70% times it is because of you. You are letting them watch while feeding them. आपको लगता है आपका काम खत्म हो जाए जल्दी से. You give them chocolates, you give them chips, you give them everything sugary when they cry, just to pacify them, just to अपना लोड कम करने के लिए. सो यहाँ पे अगर बच्चा फिर नहीं सुनता है करता तो इमीडिएटली यू टैग द किड कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है. 90% please kindly don't do that, don't tag your child. Right, so before I start, I would like to invite Dr. Reshma, Dr. Mansi also. I guess they will be taking time. Dr. Reshma is there eventually. It's okay, I will start with Baraita cup, and then Mansi will join us and she will take over with the chamomilla, and then I will later on say calcarea phosphate, calcarea carpe, and natrium erratica. Right, so Baraita carp is my personal favorite because that was a case history and we had a very good result. Dada and Dada's team had a very good result over this. The patient is still with us, but we had a very good result. And don't think that here the patient was mentally deficient child, which is the characteristic of Baraita carbonica. But उसके 2-3 symptoms, particular symptoms ऐसे थे जो बच्चे में हमें दिख रहे थे. So we had to give him Baraita carb and we got very good results. Right. So I start with Baraita carb that they are mentally deficient children. And this Baraita carb children, they have big head and a larger abdomen compared to the overall body structure. And we consider them little immature because of the mental and physical dwarfishness. Dwarfishness in Hindi में हम बोलेंगे कि छोटे, right? दिमाग से भी छोटे और physically भी छोटे, sort of. And their memory is quite dull, it is quite weak, and that is one thing that they cannot retain anything that is taught to them. And because of this thing, their imagination power is also very weak because उनको कुछ याद नहीं रहता है, and then they cannot construct anything in their mind, and that's one thing, they cannot do any constructive job also. And they are always dependent, because of this nature, they're always dependent on others to perform their job. And eventually when they grow, उनमें इस वजह से लो कॉन्फिडेंस रहता है. सो लो कॉन्फिडेंस एकदम बचपन से नहीं होता है, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं, सो आई वुड लाइक यू गाइज टू काइंडली म्यूट योरसेल्फ सो दैट इट इज इजी फॉर अस. सो आई विल म्यूट एवरीवन. Right. So what was I saying? Okay, the kids they are shy, they are coward, but they are very stubborn. And since they are coward, they do not like to speak to the strangers. Neither they like to play with strange kids also, whom they are strange to. So ना तो उनके सामने आते हैं, and they basically don't like anybody's company. They are very happy in their own company. Even when some guest is there in their home, they will try to hide themselves behind a furniture. आप कई बार ऐसे छोटे बच्चों को देखते हैं. Don't think they are Baraita car, but the Baraita carp kids, they will eventually hide themselves behind a furniture, or they will hide their face and they will just try to peep through their fingers. ऐसे ऐसे करेंगे and they will try to peep through their fingers. And I said कि as they grow big, तो उनका confidence low होता चला जाता है, and that is one thing, whatever work they start, they will never finish it off. That is another thing. And they are very scared of mockery. Why? Because again, they know they have low confidence, they have incapability, they have this weakness, and they will always suspect that some other child is throwing a mockery at them, they are laughing at them. तो उनको इस चीज का बहुत बड़ा डर लगा रहता है. Right?
And since we know that mentally and physically they are dwarfish, so they have a delayed speech, they have delayed walk, and these kids will smile very slowly. आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये बच्चा स्माइल करने जा रहा है या नहीं, but they will smile very timidly, very slowly. One fantastic characteristic of Baraita carp kids, they will have this saliva dribbling out of the mouth all the time, especially at night. बराइटा के अगर आपका अगर कोई लेडी बोल रही है कि मेरे बच्चे का तकिए पे हमेशा थूक रहता है, वो रहता है, it's a Baraita carp sign. It's a characteristic. So they will always, their saliva will always be dribbling, especially during the night while they are sleeping. Their feet are very smelly, and they are prone to frequent cold and cough. ये एक रेमेडी थी जो हमने एक बच्चे को दी थी, क्योंकि कंटिन्यूस कोल्ड एंड कफ जा रहा था. एंड कपल ऑफ मंथ्स वी हैड टू गिव, ऑफ कोर्स एज आई ऑलवेज से, कि माँ को और बच्चे को दोनों को वी हैव टू स्टार्ट विद BFR so that we can try to understand the parent. But they generally have continuous cold and cough, and due to this they have frequent swelling in the tonsils. And the kid was like not in India, and so the mother said कि दादा बच्चे का टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना पड़ेगा. दादा ने बोला बच्चा कितना छोटा है, बच्चा इतना इतना छोटा है. सो ही वॉज डेड अगेंस्ट. बोले अगर आपको डॉक्टर से पूछ लो कितना टाइम है. बोले कि दादा अभी थोड़ा बड़ा होगा. तो बोले चलो हमारे पास फिर टाइम है. बिलीव मी, फॉर 4 months बराइटा का विद अलग 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 हमने उसको 30 में कभी 200 में, डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या जरूरत थी, उसमें दिया. एंड द किड नेवर हैड टॉन्सिल्स again, never had cold and cough also. Of course उसके साथ हमको दूसरी रेमेडी, but this was the characteristic of that baby, जिसकी वजह से ट्रस्ट मी जब कोल्ड एंड कफ चला गया, सो दैट वाज एन ओवरऑल काइंड ऑफ अ ग्रोथ इन अ चाइल्ड. क्योंकि वो जो मेजर सिम्टम था, बच्चा बढ़ ही नहीं पा रहा था, कंटिन्यूस कोल्ड एंड कफ. सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बराइटा कफ. एंड यस, द बराइटा कफ kids, they are very fond of eating sweets. Their feet smell, as I always say. And another important characteristic of Baraita cup kids is that their tissues are collapsing and degenerating, because of which they continuously lose weight, and the glands of the stomach lining and the intestine, they start increasing. So ये एक बहुत बड़ी problematic situation होती है, जो of course it takes a lot of time in the treatment, and fortunately this thing was not there in the kid. Couple of symptoms जो मैंने अभी आपको बताए थे कि वो थूक वाला था एंड दिस टॉन्सिल वाला था. एंड अनदर थिंग दैट वाज देयर इन द चाइल्ड, उसके लिए भी दादा ने यही बोला था कि आई विल लाइक टू गिव बराइटा बिकॉज ही हैड अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स. ये बच्चों में पाए जाते हैं कई बार, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स विद कोल्ड एंड कफ एंड सॉर्ट ऑफ अ टॉन्सिल एंड ड्रिबलिंग. सो ये तीनों सिम्टम्स इस बच्चे में थे. तो वेरी लाइक यू नो इंस्टेंटली ही सेड कि आई वुड लव टू स्टार्ट विद बराइटा कफ. एंड at one point I was little hesitant, क्योंकि of course मैं तो जस्ट पढ़ने ही लग रही थी, तो मेरे लिए था कि मैं उस पे ही अटक गई थी. And why I'm again saying, because when we study all these symptoms in different kind of books, the main symptoms is that these kids are mentally deficient child. And my argument with Dada was कि ये तो perfect child है, ये तो बिल्कुल mentally deficient child नहीं है. और नहीं इसकी मॉम ने कुछ बोला. बोले हर बार हमको एक ही चीज नहीं पकड़नी होती है, हमें देखना पड़ता है कि 3-4 सिम्टम्स मिल रहे हैं इस मेडिसिन के, इस रेमेडी के. ये अगर जाएगा तो इस बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ होगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा रिजल्ट. एंड वी हैव टू ट्राई दिस बिकॉज इसमें से 3 मेजर सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं. सो दैट you know, these were the brainstorming sessions most of the time at night after discussing the case, or after taking this case while we were discussing. So for 4 big months, we had given Baraita cup to the kid, and believe me, tonsils, that was clear. Dribbling, ab bachcha bada hai. It has been almost 3 to 4 years with the child and with the family, and there is no saliva dribbling at night or even during daytime. Bachcha bahut aaram se hai. And of course, the best part was that undescended testicles, we got a very good result in that, which will, of course, will help him to boost his confidence later in life. Right? And beyond this, I would like to say that Baraita carb is very good for
old age people also. It's a very good remedy in old age also, because वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारे टिश्यूज डीजेनरेट होने लगते हैं, हमारे टिश्यूज कोलैप्स होने लगते हैं, राइट? सो इंसान जनरली दुबला पतला होने लगता है इफ दिस हैपेंस. सो दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ओल्ड एज पीपल ऑल्सो. Yes, now I would like to invite Dr. Mansi if she is here. Let's see. Mansi, can you unmute yourself, please? Yes, ma'am. Yes. So, and Mansi, can you be on the video? Great. So I will pin Mansi also. Yes, Mansi. Welcome, Mansi. And guys, here we have Dr. Mansi. Yes, Mansi. Hello everyone. Good evening. So आज हम लोग मानसी आवाज थोड़ी सी आवाज. ओके, अभी आ रही है ठीक से? ओके, ठीक है. तो अभी बराइटा कार्प के बारे में तो रितु मैम से हम लोगों ने जान लिया. अभी मैं कैमोमिला चाइल्ड के बारे में आपको बताऊंगी. तो कैमोमिला चाइल्ड वो स्पेसिफिक चाइल्ड के लिए रेमेडी है जो चाइल्ड में फ्रिक्वेंट डिसीजेस होते हैं, लाइक डायरिया है, फिर एनी टाइप ऑफ पेन है. वो कैमोमिला रेमेडी इस तरीके के जो सिम्टम्स चाइल्ड में देखे जाते हैं उसमें बहुत यूजफुल है. लाइक कैरेक्टरिस्टिक जो है कैमोमिला चाइल्ड का, तो बच्चा बहुत रेस्टलेस होता है और एंग्री भी बहुत ज्यादा होता है, और पीविश उसका नेचर उसका पीविश होता है, और ओवर सेंसिटिव होता है. हर किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे वो ओवर सेंसिटिव होता है. उसका जो पेन होता है वो अनबियरेबल होता है. लाइक और नेचर वाइज भी वो लाइक आप बच्चे के सामने मतलब देख भी लिया या वो कुछ भी कर रहा है तो उसमें आपने इंटरफेयर कर दिया तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, और गुस्से में वो आपके तरफ वो चीजें भी फेंक सकता है, एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करता है, और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा होता है. और उसके जो भी डिसीजेस है उसको कोजेशन, मेन कोजेशन भी उसका एंगर ही है. और अभी हम देखें तो लाइक जो बच्चा होता है उसको कई सारी चीजें होती है जो सेम टाइम पे जरूरत पड़ती है उसको. कई सारी चीजें वो मांगता है, लेकिन जब भी उसके पेरेंट्स है, उसके फैमिली है, उसको ऑफर करते हैं तो वो तभी रिफ्यूज कर देता है या फिर सामने से फेंक देता है चीजें. उसका बिहेव ऐसा होता है. और उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि बच्चे को आप उठा के अपनी गोदी में उठा के सुलाते हो या फिर पूरा दिन अपनी कैरिड अवे करते हो तो वो अच्छे से शांति से रहता है, और उसको कॉन्स्टेंटली पैट करते ही, उसकी मदर है या कोई भी फैमिली मेंबर है उसको कॉन्स्टेंटली पैट करते हैं तो वो अच्छी तरह से होता है. तो उसको उससे सिर्फ वही एक चीज है जो वो बच्चा शांत रह सकता है ताकि उसकी मदर उसको गोदी में ले ले. और उसका अभी हेडेक का देखें तो हेडेक में क्या होता है कि फिर कोई एक साइड का हेडेक होता है और थ्रोबिंग हेडेक होता है, और वो भी अनबियरेबल होता है. और बच्चा जब भी मतलब बैकवर्ड बेंडिंग करे, पीछे देखे तो उसको उससे आराम मिलता है बच्चे को. और स्पेसिफिक सिम्टम एक ये है कैमोमिला चाइल्ड का कि उसका एक चीक है वो रेड एंड हॉट होता है और दूसरा वाला पेल एंड कोल्ड होता है. और नींद में भी वो ऑलवेज कोई भी चीज हो उसमें ऑलवेज कंप्लेन करता रहता है. लाइक छोटी छोटी बातों पे भी उसको इश्यू होता है. नींद में भी वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा या रोते रहेगा, या फिर नींद में भी वो अपनी आईज को जो आधा ओपन रख के ही सोता है, हाफ ओपन आईज होती है उसकी नींद में भी. और फिर जो टीथिंग चिल्ड्रन है, जो जिसके नए नए टीथ आ रहे हैं उसमें टूथेक हो रहा है बच्चे को, उसमें भी कैमोमिला बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है. लाइक कोई चीज कोई चाइल्ड है जिसको ये अपना वार्म वाटर देते हैं, उसके हिसाब से उसका टूथेक बढ़ जाता है तो उसमें कैमोमिला बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है. या फिर उसके टीथिंग टाइम पे जो बच्चे को डायरिया वगैरह सब कुछ हो जाता है तो स्पेसिफिक सिम्टम है कैमोमिला चाइल्ड का. लाइक उसका स्टूल है ग्रीनिश वाटरी इस टाइप का होता है, और स्टूल का अपीयरेंस है वो एग्स एंड स्पिनच चॉप्ड करके जैसा अपीयरेंस आता है, स्टूल का अपीयरेंस वैसा होता है. और पेन जो होता है उसका
टूथेक है वो नाइट में एग्रावेट होता है, वार्म वाटर से एग्रावेट होता है, और कोई भी ओवरऑल हम सेंसिटिवनेस उसकी देखे या फिर कोई भी सिम्टम उसके देखे तो उसका मेन कॉजेशन एंगर होता है या फिर वार्म वार्म थिंग है कुछ भी, या गर्म खाना होता है या गर्म कोई भी ड्रिंक होती है वो उससे होता है या फिर एंगर से होता है। और उसका जो कोल्ड एंड कोराइजा है, फ्रिक्वेंटली कोल्ड एंड कोराइजा हो जाता है, उसमें भी हम लोग कंसल्टेशन करें तो उसका रेटलिंग हमको सुन सकते हैं उस चाइल्ड में, या फिर टाइटनेस होती है या फिर कफ जो होता है वो सब कुछ प्रेजेंट होता है। और कोई भी बच्चा अगर हमको शांत दिखे तो वो ऑफ कोर्स कैमोमिला चाइल्ड नहीं है, बिकॉज कैमोमिला चाइल्ड जो होता है वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता, हमेशा कुछ ना कुछ वो करता रहेगा या कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहेगा या कुछ ना कुछ फिर फेंकता रहेगा, गुस्सा करता रहेगा, कुछ ना कुछ। वो तभी शांत रह सकता है जब उसको कोई भी गोदी में लेकर उसको सुलाए या फिर पूरा दिन उसको गोदी में लेके हमको घूमना पड़ता है। सो ये इतनी इंफॉर्मेशन मेरी कैमोमिला की थी। सो आई एम हैंडिंग ओवर टू रितु मैम, थैंक यू। मानसी, थैंक यू सो मच, दिस वाज एक्चुअली वेरी वंडरफुल। रिमेम्बर मानसी, तुम्हारे पास एक केस था ये वाला, सो लेटर ऑन यू कैन शेयर सम डिग्री ऑफ द केस हिस्ट्री लेटर ऑन, जब हमारे सब रेमेडीज खत्म हो जाएगी। मानसी विल शेयर कपल ऑफ हर केसेस, चाइल्ड केसेस विच शी इज हैंडलिंग वेरी वेल। और मुझे याद है कि मानसी के एक केस में बच्चे की माँ ने बोला था कि कई बार मेरा मेरा मन करता है कि ये रोता है या जिद करता है कि मैं उसको पुचकारूं नहीं, मैं इसको थप्पड़ मारूं। सो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वॉज लिटिल अगास्ट कि भाई ये तो ठीक है, बच्चे तो करते ही हैं, बट दिस इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक कि कैमोमिला वाले बच्चे को देख के अक्सर पेरेंट्स या even if some other people are watching them do such a with such a kind of a behavior, they feel like slapping the child. Please don't do that, but this is again the characteristics we are talking about, right? So I will try to cover the last Sunday's remedy in short because we did not have the recording, and at the same time um, there was a request also. Right. So the first remedy that I had taken, which was Dada's personal favorite, and that was Calcarea carp. So the Calcarea carp child is fat, flabby, and anemic. Okay, Mansi, I will just remove the pin 1 second. Yes. So ये बच्चे थुल होते हैं, फैट होते हैं, and but at the same time ये anemic बच्चे होते हैं. Right, and they have a big head and a big stomach, but their legs are thin and it's kind of a deformed, they're slightly deformed, and hence they find it difficult to walk because their ankles are weak. And again, why? Because there is a lack of calcium in the body. That is why they have this delayed teething, delayed walk, all again because of lack of calcium most of the time. And another thing is that they are not very active, smart, or physically, we can say they are so weak that they do not take part in any kind of function in the school, or they play games with other children. Because I wouldn't exactly say that they are mentally weak, but they are kind of mentally slow. And they require a lot of time to learn something or grasp something. और इतना स्ट्रेस हो जाता है उनको, बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स चिल्ड्रन कंप्लेन ऑफ हैविंग headache. They do not understand that it's kind of a बस मेरा सर भारी हो रहा है. That's because the grasping is little kind of slow. And again, they do not make more friends, very less friends, because they are physically weak. और वो कोप अप नहीं कर पाते बाकी बच्चों के साथ फिजिकली एंड इवन मेंटली. So they try to keep themselves away from other kids, right? And they sweat a lot. The upper part of their body, it sweats a lot, so much so that आप देखेंगे कि like most of the time उनका पिलो भी ऐसे भरा हुआ रहता है. And their sweat, their private parts, their urine, they smell acidic. थोड़ा सा acidic smells आएगा. हम कई बार माएँ डिस्क्राइब नहीं कर पाती, बोलती बहुत गंदी सी स्मेल आती है. So that's kind of an acidic smell. And their feet and generally they are cold. कई बार माएँ बोलती कि है ना, ये फ्रॉक की स्किन की तरह फील होती है, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट सी. So that is because their feet and their palms, even the hands, palms and legs, they are very cold and moist. And they generally like to eat egg and salty and even sweet food. And especially they are very fond of ice cream, right? And they kind of hate to have
meat or milk and milk products. उसकी वजह से their milk tends to curdle inside them and they tend to vomit very fast. Another thing is that they are very stubborn with nature and they will throw tantrums here and there to just to get their way out. जो कि मैंने अभी पहले बताया था, जनरली ये सब बच्चों में पाया जाता है बिकॉज इवेंचुअली उनको पता चल जाता है कि अगर वो टेंट्रम थ्रो करेंगे तो उनकी मांगे पूरी हो जाएगी. बट दिस इज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकेरिया का. By nature, they are very coward and they're scared of darkness, dogs, rats, horror stories, loud voice, closed spaces. And आप horror movies और stories होंगी तो वो चिल्लाना चीखना चालू कर देंगे. So that is one thing when we are feeding our children या जब हम उनके खाने के लगा देते प्लेट और टीवी ऑन कर देते हैं, trust me, कंटिन्यूस सीन्स में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा डर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के इमोशंस पे फर्क पड़ सकता है. सो काइंडली इवन बोलते ना बच्चों के लिए भी कुछ लगाते तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि बच्चों को डरा सकती हैं. So these are the things, these are the traumas, these are the mild traumas that keep on seeping inside them. And they can have an adverse effect even in later stages of life. और एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यू कैन ऑलवेज फाइंड द नोज फिल्ड विथ येलोइश ग्रीन कलर का बूगर होता है जो कि म्यूकस भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में. सो दैट देयर नोज इज ऑलवेज फिल्ड एंड दे विल ऑलवेज कीप ऑन इरिटेटिंग देयर इरिटेटेड बाय देयर नोज. And they don't like the cold weather. Their trouble increases in the winters and even they can't bear much of sunlight. इधर अगर हम बोलते हैं कि winters में उनकी aggravate हो जाती है trouble, but at the same time they do not like much of the sunlight. And that is one thing कि cold weather नहीं पसंद. They do not like to take bath. They do not like to play in water at all. And their trouble increases especially on no moon day and even on the full moon day. This was described and this was taught to us by Dada. Pregnant lady के like during pregnancy there's a 70-80% of her water. And what happens during full moon day कि बोलते हैं ना कि ओशन की जो वेव्स होती है वो उफान लेती हैं. तो कई बार मदर के नेगेटिव इमोशंस अंदर अंदर बच्चे में इफेक्ट करते हैं. एंड दैट इज द रीजन कि बच्चा उस 70-80% ऑफ फ्लूइड के अंदर है. सो वो फुल मून एंड नो मून के दिन बहुत एग्रीवेट हो जाता है, विच जनरली आर यंग मदर्स डू नॉट अंडरस्टैंड. एंड दैट वाज वन थिंग जब हमारे एंसेस्टर्स या पुराने लोग बोलते थे कि प्रेगनेंसी में औरत को खुश रहना चाहिए, अच्छी चीजें बोलनी चाहिए, अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, अच्छी चीजें सुननी चाहिए, so that she is not experiencing any negative emotions, because you do not know when the negative emotions will harm you and eventually is going to harm the kid. और वो जरूरी नहीं है वो ध्यान रखे कि आज न्यू मून डे है, फुल मून डे है, नो मून डे, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू कॉल. सो दैट इज वन रीजन एंड दैट इज अगेन अ मेन कैरेक्टरिस्टिक. एंड अर्ली मॉर्निंग एंड मिडनाइट में ये बहुत इंक्रीज रहता है इनका ये एग्रीवेशन बच्चों का. And this calcaria carp, we had a very good result with Dada in one of the TB patients. In one of the kid, he had a TB, और फिर पता चला कि mom also had TB. So again, we are trying to remove the disease from the root. That is why we go for the mental and physical genders, and that is a constitutional treatment, as I said. And स्पेशली स्किन डिजीजेस और वॉमिट, मतलब ये 3-4 सिम्टम्स थे जो हमें उन बच्चों में पाए गए थे. एंड वी हैड अ वेरी गुड रिजल्ट विद कैलकेरिया कप. दैट वाज वन रीजन आई लेड मोर स्ट्रेस ऑन नोज फिल्ड विद बूगर एंड आई लेड मोर स्ट्रेस ऑन नो मून एंड फुल मून डे पे इनका बच्चों का एग्रीवेशन हो जाता था. और एक और चीज थी जो हमने लाइक ऑफकोर्स यस दादा का ये था कि उन्होंने पकड़ा था ये, their pillow was wet due to the sweat. These were 3-4 main characteristics of calcarea carp जो हमने वो निकाल के we had given the remedy in different potencies accordingly and eventually tapered down the potencies also. Right, so had a very good result with diarrhea, vomiting patients for the calcarea carp. And the second remedy which I had covered last Sunday was calcarea fos. And the characteristic of calcarea fos is again that they are so thin built that even the child, they can count their ribs. They are so thin built, and surprisingly their belly is quite big. These kids, they have a very big belly.
And like calcarea carp, even they are very sweaty. They have a lot of sweat on the head, and overall they are of very irritable behavior. Later on, we will understand that even lycopodium kids, they have very irritable behavior. And these calcarea phos kids, they can never be happy at any cost. They are always complaining. ये हो गया, मतलब अगर आपने वो दिया तो उसमें भी वो कंप्लेन निकालेंगे, जैसे कि अभी मानसी ने, तो ये चीज मानसी ने जो बोली, आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये अगर कैरेक्टरिस्टिक उसमें है तो इसमें क्यों नहीं है, या इसमें भी है और उसमें भी है. बट दैट डजेंट मीन कि आप कंफ्यूज, बिकॉज यू हैव टू फाइंड अदर थिंग्स ऑल्सो इन अ चाइल्ड. सो जनरली देर आर characteristics that will be overlapping in different remedies, but उसको नहीं पकड़ के रखना है. आपको ओवरऑल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि और क्या सिम्टम्स या और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उस बच्चे में, राइट. So they are always complaining, as I said, and they like to be on themselves again.